Assalamu alaikum. Today's editorial from Dawn newspaper. It was published on Dawn newspaper on 28th April 2020. As you can see, the title of this editorial is Saudi Human Rights. So we are going to read the whole editorial and then discuss its difficult words into English and also discuss this editorial into Urdu. Two recent changes to the Saudi legal system point to the fact that the ultra conservative desert kingdom is slowly taking steps to bring its laws in line with international human rights principles. The Saudi Supreme Court had over the weekend announced that convicts would not longer be flogged. The punishment has been meted out to people for a range of crimes. Another development quotes the country's Human Rights Commission as saying that the capital punishment will no longer be given to those convicts of committing crimes while they were minors. While observers would be right in asking what took the Saudis so long, considering the kingdom's peculiar history and austere modes, this is progress nonetheless. The Saudi apex court was quoted as saying that the moves are part of human rights advances. As per the vision of King Salman and his son, Crown Prince Mohammed, the real power behind the throne. It is a fact that since his father ascended the throne in 2015, the Crown Prince has been trying to remake Saudi Arabia as a nation for the modern era, shedding the austere Wahhabi codes his own forebears put in place. This has included giving women the right to drive, allowing gender segregation, and allowing international entertainment events. Even a decade ago, most of these things would have been unthinkable in Saudi Arabia. But the march to progress also has a darker side, with Mohammed bin Salman accused for ruthlessly weeding out any dissent to his rule. Indeed, the crown prince has not even spared some of his closest relatives, blue-blooded members of the House of Saud, in his quest of accountability. Legal and social reforms will be meaningless unless there is freedom of speech and expression in the kingdom. Currently, even the vigorous criticism of the crown can land Saudis in hot water. Perhaps slain journalist Jamal Khashoggi is the most well known victim of this ruthlessness. The legal changes are great, but there remains much to do before common Saudis can breathe freely. Now we are going to discuss the difficult words. Yes, there is the first word is flogged. Flogged means beat with a rod or something. Next one is peculiar. Peculiar means unique or specific to a person. Austere means very plain. And next one is apex. Apex means highest point, highest court. Okay. Next one. Next one is scandid, given to his son, and forebears means a person from whom you are descended or feeling lower. And ruthlessly means the without mercy or piety. And the last one, slain word means killed intentionally.
And there is another one, segregation. Segregation means separatism or society where there is some laws for their minorities. And weeding means cultivated plants. So these are some difficult words. You should use these words into your sentences and rewrite this editorial into your own easy English as you can, just like to write a pressy. सो इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने यही डिस्कस किया है कि सऊदीज़ भी बाकी दुनिया की तरह एक ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को। और इसमें हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा है कि यानी बहुत स्लो कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इसको अडॉप्ट करने पे अब एग्री हैं। उसके अलावा इन्होंने ये जो है वो डिसीजन लिया है कि ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा है कि कोई भी इंसान उसको मतलब इतनी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अगर उसने बहुत कम उसका जुर्म है, तो फिर उसको उस हिसाब से कम सज़ा मिलेगी। और उसके अलावा जो चीज़ें इसमें हैं ये है कि अगर इनकी हम हिस्ट्री को देखें सऊदीज़ की, तो उसमें ये जो चेंज है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये क्यों है, क्यों चेंज ये आ रहा है? ये जी उनके इस राइटर के कहने के मुताबिक किंग सलमान और जो उनके सन है यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद, जो कि रियल पावर थ्रोन के बिहाइंड जो है वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद के पास ही रियल पावर है, तो उनकी वजह से जिनका एक एजेंडा है कि रीमेकिंग है, वो सऊदीज़ लॉज को चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे रीमेकिंग स्टार्ट की हुई है। और नेक्स्ट अब देख लें तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि 2015 जब से ये यानी बादशाहत उनकी आई है, तो क्राउन प्रिंस जो हैं यानी कि जो उनके क्राउन प्रिंस मोहम्मद हैं, उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान को मॉडर्न एरा में ले गए। उसमें फिर उन्होंने डिफरेंट चेंजिंग्स की हैं, जैसे कि वुमेंस को ड्राइव करने का दे दिया राइट। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं। सेग्रीगेशन का मीनिंग आपको बताया कि सेपरेटिज़म है, यानी माइनॉरिटीज़ के लिए डिफरेंट लॉज इन्होंने अमेंड किए हैं। उसके अलावा जो इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि कॉन्सर्ट वगैरह, हमने पहले सुना था कि सऊदी अरेबिया में कंसर्ट हो रहे हैं, तो ये पहले कभी नहीं था, इनकी प्रीवियस हिस्ट्री में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था। तो यही बात है कि डेकेड अगो अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इस तरह की चीज़ें सोचना भी नाकाबिले बर्दाश्त था वहाँ पे, जो कि अब हो रही हैं। तो ये प्रोग्रेस, जैसे किसी चीज़ की प्रोग्रेस होती है तो वो कहते हैं कि इसकी कोई ना कोई डार्कर साइड भी मौजूद होती है। तो मोहम्मद बिन सलमान को एक्यूज़ किया गया था, यानी उन पे काफ़ी इल्ज़ामात हैं कि वो यानी काफ़ी रूथलेसली जो हैं वो मतलब अपने, यहाँ तक कि अपने जो क्लोज़ेट रिलेटिव्स हैं उनको भी नहीं माफ़ किया उन्होंने। तो ये अकाउंटेबिलिटी उनके पीछे है, यानी जो भी एहतसाब है उनका भी रहता है। और बाकी भी चीज़ें जो फिर ये सोशल रिफॉर्म या लीगल रिफॉर्म जो है ना, ये मीनिंगलेस हो जाते हैं अगर वहाँ पे किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यानी एक्सप्रेशन का हक नहीं है किंगडम में, तो ये बाकी लीगल और सोशल रिफॉर्म्स फिर कोई मायने नहीं रखती। तो क्रुएल्टी है। और वो अलावा इसके और भी चीज़ें जो क्रिटिसाइज़ करती हैं वो फिर मुश्किल में डाल देती हैं क्राउन प्रिंस को। तो उसके अलावा ये जो जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, इनका जो कत्ल हुआ है उसके बारे में भी ये काफ़ी जो है बेरहमी से कत्ल किया गया, तो उसकी भी अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। तो जितने भी लीगल चेंजेस हैं ये बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है कि कॉमन जो सऊदीज़ हैं उनका आज़ादी से सांस लेना ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसका थीम है एडिटोरियल का। फ़ायदा तब है अगर आप इस एडिटोरियल को अपनी जो है वो अपनी लैंग्वेज में इसको